are being watched today across all of India. All of Bharat is watching Republic. I can also say that all of the free and independent state, the free people of the proud nation of Balochistan are watching Republic, and Republic is the only global network with a lot of live reporting from Balochistan. We have many reporters in the free and independent nation of Balochistan who will be joining us tonight from the country called Balochistan. We will not wait for any official recognition by the rest of the world. As far as we are concerned, we recognize the state of Balochistan. We are joined tonight by Ahmad Ayub Mirza. Bahut Baloch will join us from Pakistan. Yasir Janjua and Ishad Ahmad are joining us. And Savio Rodriguez, senior journalist, is also being joined by the greatest voice on Indian defense and strategy, General G.D. Bakshi. General Bakshi, you're watching this tonight. Can you wargame this for us? What do you see happening? This is an unusual situation. I want to begin by saying I'm against violence. I'm against the execution of combatant and non-combatant soldiers in these circumstances. But there is a whole series of events that's led up to this. What will happen during and after this right now? General Bakshi, we've just been told that over 100 Pakistani soldiers have been executed, and the Baloch Liberation Army is holding on to the hostage situation. Sir. Arnab, I have a sense of deja vu today. When I was 21, I was fighting. I took part in the war for the liberation of Bangladesh. I distinctly remember that atmosphere and that entire, excitement that was in the air. Sir. And then I remember somebody quoting Victor Hugo. No army, repeat, no army can withstand the strength of an idea whose time has come. Then it was the time for the birth of Bangladesh. Yes, sir. Arnab, cut to 2025. It is the time for the birth of Balochistan. Balochistan, sir. There is more than just synchrony in this. It is time for the birth of Balochistan. Why? It will emerge from the suffering of its people. Terrible suffering of its people, just as Bangladesh arose from the suffering of the Bengali people. General Tika Khan, butcher of Bangladesh, was let loose in Dhaka, right? Let loose over the whole of then East Pakistan. 1 million, women raped, 3 million Bengalis killed, 10 million pushed out into India. Did it stop the birth of Bangladesh? The Chinese came in on their side. The Americans sent the 7th Fleet. Did it stop the birth of Bangladesh? Yes, no. Sir. No, there sir. are forces of history, Arnab, and those forces of history emerge from endless oppression. 1973, the same General Tika Khan takes charge in Balochistan. Right, and sir. unleashes a core-sized operation to now do what he did in Bangladesh. He now earned the title of the Butcher of Balochistan. He got Iranian, attack helicopters sent by the Shah to cut loose on the people, aircraft, jet fighters, bombarding, artillery, tanks, the works. He thought he had snuffed out the last flicker of the flame of freedom. You can think again, Arnab. Yeah. You can look at what is happening. Yeah. When your oppression reaches a certain threshold, yeah. when you pick up people from the streets, boys and girls, torture them insanely, take them up in helicopters, throw down their bodies in their own villages and towns, in the streets of their villages and towns, well, you got something coming your way. You got something. There is a justice somewhere on top. Arnab, and that is what has caught up with Pakistan and its misdeeds. It has raped the resources of Balochistan. Well, right now I'm not going into gas, issues of uranium, resources. I'm looking at a situation that Pakistan is unfortunately handling. Now, ladies and gentlemen,
I must share with you that a lot of people watching live tonight And are badly. watching also from Pakistan, because the Pakistan official channels have blacked out the real information of what is happening in Balochistan. They don't want the people of Pakistan to know that the Pakistan army cannot handle the situation, that it is losing. I showed you the pictures some time back, and the pictures are heart-wrenching. Major Janjua, 200 coffins being prepared and sent by the Pakistani army to bring the bodies back home. Why has the Pakistan army been completely unable to get an upper hand in this hostage situation after more than 30 hours? It's an absolute failure. It's an absolute failure. You are either on the back foot or they have a military advantage over you. Major Janjua, please. Arnab, I don't know, where do you get your news from? From independent sources in source of Balochistan, news? not from Because they are Geo not News or only from ARY Pakistan. News or They are Pakistan, not only Pakistan from television. Ji. ARY is right now in front of my television screen right now. Yeah, that here. never watch a There's nothing Pakistani like channel that for news on ARY. Balochistan. Let me give You think any let me give Paki you channel the will fact tell you check. about Balochistan? Let me give you a fact check. The fact check is 95% of those terrorists have been killed, eliminated, and there is a cleanup operation, mopping up going on, and in the next few hours. Then why are 150 people still hostage? Why are your channels not live there? आप Well, झूठ मत बोलिए. Don't mislead people. Arnab, It won't help you. Okay. Well, Just it's not 1 hour helping you. ago, 50 soldiers were executed. इतना बोलो कि सच लगने लगे. You are trying to portray stories. Obviously, we understand your agenda because you I have no want to agenda. I want peace. divert the attention of the world from the I want atrocities peace. you are unleashing in Kashmir, and that's why Don't be you are obsessed on spending, Kashmir. Your country is about to India is break up. spending heavily on No. unrest in Balochistan. It is no different than what IRA was doing in Ireland, and they did not succeed. Balochistan is made up of people who are loyal and love Pakistan. These miscreants, they are terrorists only. नहीं, They are not miscreant Baloch, बोल they के are नहीं होगा terrorists. ना. You are handling, you can call them terrorists, but you are a terrorist country. जाया No? कर रहे हैं, सबका वक्त जाया कर रहे हैं. Okay, Arnab, if we are a terrorist country, आप so टाइम the जाया terror कर is रहे being हैं, आप unleashed 2 in मिनट Kashmir खामोश by रहें, placing please. 900,000 soldiers in Kashmir. That's Volume. called terrorism. That's वो terrorism. जनरल That's बख्शी called साहब state ने terrorism. विक्टर ह्यूगो We को have not- कोट किया और बड़ी अच्छी उन्होंने बात की. मैं Volume, भी volume. वो मेरे उस्ताद भी हैं Ayub जनरल Mirza, साहब. Ayub Mirza, उन्हीं के volume हवाले up. से Ayub मैं Mirza. विक्टर I ह्यूगो don't का like- एक Ladies and quotation gentlemen, है. I don't that is like- Amjad Ayub Mirza, well-known activist from Pak-occupied Kashmir, author, independent voice. The Pakistanis hate him, but Ayub Mirza must speak. Abhi Ayub Mirza, please. Ayub Mirza साहब आप बोलिए. आपको रोकने की कोशिश होगी, मगर आप रुकिए मत. आप बोलिए. पूरा भारत आपको देख रहा है. मैं कह रहा था कि उस्ताद गिरामी मेजर जनरल बख्शी साहब ने विक्टर ह्यूगो का हवाला दिया है, तो मैं भी विक्टर ह्यूगो का ही एक हवाला दे देता हूं कि व्हेन डिक्टेटरशिप इज अ फैक्ट, रेवोल्यूशन बिकम्स अ राइट. अब मसला ये है कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है बलूचिस्तान में, ये सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं हो रहा. मेरे पास जो लाइव ब्रेकिंग न्यूज आ रही है उसमें एक तो ये है कि खजदार के शहर ओरांच पर मुहासरा किया बलोच कर्मचारियों ने. वहां पे लेवीज की एक चेक पोस्ट को आग लगा दी, एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, और सारा जो वहां का वेपन और एम्युनिशन था वो कॉन्फिस्केट करके ले गए वहां से. तुर्बत यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आज बाहर निकल आए हैं. उन्होंने रैलियां निकालनी शुरू कर दी हैं. 24 घंटे का टाइम दिया है उन्होंने, और जिसके बाद वो कह रहे हैं कि हम इंतहाई एक्शन लेंगे. सोसाइटी, बलोच सोसाइटी के हर सेक्शन इस वक्त सड़कों पे है, चाहे वो मिसिंग पर्सन्स की ऑर्गेनाइजेशंस हो जैसे बलोच यकजहती कमेटी है, चाहे वो वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स हो, चाहे वो कोई भी सेक्शन है, वो इस वक्त बाहर हैं. और जैसा आप कह रहे हैं, इन्होंने जो 200 के करीब कॉफन्स, एम्प्टी बॉक्सेस ऑफ कॉफन्स क्वेटा रेलवे स्टेशन पे आज पहुंचाए हैं. वो क्यों पहुंचाए हैं? इसलिए पहुंचाए हैं कि ये मानते हैं कि आटे के साथ घुन भी पिस जाता है. ये अपने ही फौजियों को मरवाएंगे.
ये कहते हैं वो मरते हैं, मरने दो, कोई बात नहीं, हमने इनके साथ बातचीत नहीं करनी। और अगर ये दहशतगर्द हैं BLA वाले और BLF वाले और ये आजादी का नारा लगाने वाले अगर टेररिस्ट हैं, तो फिर नाजी जर्मनी के खिलाफ जितने हमले हुए, जितनी ट्रेन पे बमबारियां हुई, जितने नाजी गस्टापो की ट्रेनों को बम से उड़ाया गया, उसको भी फिर इतिहास की किताबों में, इतिहास के पन्नों पर टेररिज्म लिखा जाए। और जो नाजीज की ऑपरेशन थी उसको फिर जस्टिफाई किया जाए। मैं कोई अपोलोजिस्ट नहीं हूं, ये दिस इज वॉर। BLA ने तमाम औरतों को, बच्चों को और जो एल्डरलीज थे उनको फिजल आउट, उनको निकाला है, उनको छांटी की है, उनको निकाल के अलहदा किया है। फिर उन्होंने अपनी दो मिर्जा साहब, आपने जो पहली बात कही बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक मिनट जरा मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। जी जी जी, आप कह रहे मिर्जा साहब, आपके अपने जो इंटेल या अदर सोर्सेज से खबर आपको मिल रही है, उसके हवालात से आप कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के अलग अलग हिस्सों में इंडिपेंडेंस डिक्लेयर हो चुकी है। यानी कि जो बात पाकिस्तान असेंबली में ये मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था 3 हफ्ते पहले कि 7 डिस्ट्रिक्ट्स में से 5 इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करेंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जो बात उन्होंने प्रिडिक्ट की थी, आप कह रहे हैं आज इस वक्त तो हो रही है। यानी कि पाकिस्तान इस वक्त टूट रहा है, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर हो चुकी है। आप जरा इसके बारे में और बताइए प्लीज, बिकॉज दिस इज अ ब्रेकिंग स्टोरी टुनाइट। यस मिर्जा साहब। You see, thank you. You see, Maulana Fazlur Rahman's statement is now considered an old statement because there is another statement that came from the former Home Minister of Balochistan and sitting member of Balochistan Assembly, Mir Jaffar Zahri, who from the floor of the House 3 days ago declared that Pakistan has lost the war in Balochistan. Even I cannot travel through Balochistan. I have to fly from other cities like Karachi and Islamabad to come to Balochistan airport in Quetta. So Balochistan has been cut off. Absolutely. So he said that Pakistan has no writ in Balochistan. If there is writ, the writ is of BLA Commander-in-Chief Bashir Zeb Baloch and Dr. Allah Nazar Baloch. उन्होंने चैलेंज किया, उन्होंने कहा बलूचिस्तान में पाकिस्तान जंग हार चुका है, आप हार चुके हैं जंग। तो मैंने फिर ये कहा था कि नाउ द टाइम इज कम टू सिट डाउन, पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव्स and Baloch representatives should sit down. They can't sit down anywhere, so they can sit down in Doha so that they can now sign the instrument of surrender and discuss about the modalities of it and how to withdraw. क्योंकि अगर ये withdraw नहीं करेंगे तो बंगाल में तो, ढाका में और बांग्लादेश में तो इनको पाकिस्तानी फौज को बचाने के लिए हिंदुस्तानी फौज थी। यहां कोई नहीं, इनकी टिक्का बोटी कर देंगे बलोच, टिक्का बोटी कर देंगे, इतना जुल्म किया इन्होंने। और ये बहुत बड़ी टेरिटरी है, ये सबको पता है, और ये टेरिटरी उनके हाथ से निकल चुकी है। अभी अभी ब्रेकिंग खबर ये भी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, हमारे बलोच जो सोर्सेज हैं, और आपको पता ही होगा मिर्जा साहब कि बलूचिस्तान में सबसे बड़ी मीडिया की प्रेजेंस रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की है। तो उन्होंने बताया कि Pakistan Army and ISI has intensified anti-Baloch operations of mass abduction, यानी कि innocent civilians की kidnapping अभी शुरू हो गई है in a counter move by the Pakistanis. General Bakshi, very important, a Baloch female human rights defender called Gul Zadi Baloch, आप उनको जानते होंगे, Gul Zadi Baloch and her brother have been abducted by the Pakistan Army from their residence situated in Golimar Chowk, Quetta capital. Have you heard about this? कि a female human rights activist has been abducted. पूरी पाकिस्तान आर्मी और ISI ने उनके घर को सराउंड कर दिया है और उनको अबडक्ट किया है थोड़ी देर पहले। She is an activist of Baloch civil rights group BYC Baloch यकजहती कमिटी, और गुल जदी बलोच, उनकी फोटोग्राफ भी हमारे पास है। उनको पाकिस्तान आर्मी ने किडनैप किया है। What kind of response is this, Irshad? You are picking up women? आप ब्लैकमेल करने के लिए? जी, मैं आपसे कर्ज करूंगा, जितना कि ऑल फॉल ये भी बोल रहे थे आपके साहब अय्यूब मिर्जा साहब,
मैं इनके साथ बेहतर नहीं समझता कि मैं इनके साथ डिबेट में शामिल हो, चुके ये प्रोग्राम आपका था अर्नब, मैं इसलिए इसमें बैठा हूँ। कोई और प्रोग्राम होता तो उसको मैं क्विक कर जाता। मैं कभी भी इनके साथ डिबेट में हिस्सा नहीं लेता हूँ, क्योंकि ये हमेशा झूठ का पलंदा उठा करके लाते हैं, झूठ बोलते हैं। ये पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान के चैनल पे बैठ के जहर उगलते हैं ये शख्स, और मैं इसको पसंद नहीं करता हूँ जाती तौर पे। हालांकि इंसान है, इंसानियत के नाते मैं इनके साथ बात कर लूँ तो कर लूँ, लेकिन एज ए पाकिस्तानी मैं इनको पसंद नहीं करता हूँ। दूसरी बात ये है, अभी ये बता रहे थे कि जी ट्रेन में 200 कफन जा रहे हैं और डब्बे जा रहे हैं और क्या क्या ऑल फॉल बोल रहे थे, मैं इनको सुनता रहा। ये अच्छी बात नहीं है। यो मिर्जा साहब, पाकिस्तान का नमक हलाल कीजिए। पाकिस्तान का नमक खाते हो, अगर पाकिस्तान से कोई भी मोहब्बत है या कोई भी कुछ है और तुम नमक हरामी ना किया करो, तुम बेशरम इंसान हो। मैं आपको हमेशा कोशिश करता हूँ कि तुम बेशरम इंसान हो और बकवास करते हो बैठ के चैनल पे बैठ के कुत्ते की तरह, और तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ आपको। Volume down on both sides. Balochistan and Pakistan. Pro Balochistan, pro Pakistan. दूसरी बात कश्मीर को तुम लूटते हो, तुम नमक हराम हो, तुम हमारा नमक खाते हो। Pakistani voice right now. Irshad. टैक्सों पे तुम पलते हो। दूसरी बात ये है, मैं ये कह रहा हूँ कि कश्मीर तुम्हें पाल रहा है। उंगली तुम भूखे नंगी कौम हो, तुम भूखी नंगी कौम हो तुम, और बेगैरत कौम हो जो हमारी माओ बहनों को उठाते हो, बलोच माओ बहनों को उठाते हो, जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में चादर और चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल किया है। तुम कहते हो नमक हलाल करो। हमने तो कभी तुम्हारा नमक खाया ही नहीं। तुम नमक हराम हो। जो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के नमक, पानी, लकड़ी, मादनियात उस पर पलते हो, और हमारी चीप लेबर को तुम एक्सप्लॉइट करते हो कराची से पेशावर तक। हमारे लड़कों से तुम चीप लेबर लेते हो। हमारे Irshad is on the debate right now. Top bands, Irshad. मैं कह रहा हूँ इनको म्यूट करें आप। और इरशाद लाउडा, जाहिल इंसान है, इसका म्यूट करें इसको। किसको? दूसरी ये है कि देखें, ये जो बैठे हैं आपके पास कार्टून, आपको मैं एक बात बताऊं, और मैं अगर आपका प्रोग्राम ना होता तो मैंने प्रोग्राम छोड़ देना था कि इसकी शक्ल देखते ही। लेकिन मसला ये है, देखें हमारे मुल्क में एक दहशतगर्दी हुई है, हम उस दहशतगर्दी का शिकार हैं, हम उसका मुकाबला कर रहे हैं दहशतगर्दों का। और दहशतगर्द का जहां भी हमें कोई नजर आएगा कि इसका ताल्लुक दहशतगर्द से है, वो औरत हो, आदमी हो, बच्चा हो, जो भी हो, वो जो भी होगा उसको हम एक दफा इन्वेस्टिगेट करेंगे। देखें, अगर किसी का पाकिस्तान की फौज अपने लोगों से मोहब्बत करती है, बलोची पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, बलोच मेरा दिल है, बलोचिस्तान मेरी जान है, बलोच इसे एग्जीक्यूशन करते हो और फिर मास ग्रेव्स में उनको फेंकते हो, वो दहशतगर्दी है। इसका मुंह तुम्हारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तुम्हारा कोर कमांडर, तुम्हारी फौज के सिपाही, तुम्हारे जैसे जो आके पाकिस्तान के अपॉलोजिस्ट बन के यहाँ बात करते हैं, तुम लोग दहशतगर्द हो। इसका कुत्ते का मुंह बंद करें जरा प्लीज। नहीं, ये कुत्ता मत बोलिए। लैंग्वेज, डोंट यूज दिस लैंग्वेज, डोंट यूज दिस लैंग्वेज। ये लैंग्वेज यूज ना करे, ये लैंग्वेज यूज ना करे। ठीक है, हम कुत्ते ही सही। Use that kind of language. It's very bad. Arnab, I've had a lot of friends in Balochistan. I still have a lot of friends in Balochistan. And let me tell our Pakistani colleagues out here from Pakistan what the people of हम कुत्ते हैं ना, हम कुत्ते हैं, हम काट रहे हैं, तुम्हें दर्द हो रही है, हम कुत्ते काट रहे हैं तुम्हें। हम कुत्ते हैं, हम ठीक है, हम कुत्ते ही अच्छे हैं। Revolution is not a choice, it's a destiny. The revolution in Balochistan is not a choice for them. It is their destiny. One minute. Because of the dictatorship. Irshad, louder, Irshad. आप तो शोर करना हो गए आप सारे लोग। आप मुझे बोलने दें, मेरी बात सुने, मैं आर्गुमेंट कर रहा हूँ आपसे, आप मेरी बात का जवाब दीजिए। मैंने अगर उसका मुंह बंद करने की कोशिश की है, गलत बोल रहे हैं वो, तो आप मेरी बात सुने। आप ऐसे शोर, तुम तो हमारी तस्दीक कर रहे हो ये कह के कि हमने तुम्हारा नमक खाया है, जबकि तुमने हमारा नमक खाया है। तुम हमें कुत्ता कह रहे हो और तुम कह रहे हो कि कुत्ते से भी बुरे हो। वो कुत्ते से भी बुरा होता है जो अपने जनसिस को गाली दे, आर्मी चीफ को गाली दे, आप प्रेसिडेंट को गाली करे, अपने मुल्क को गाली दे। वो कुत्ते से भी बुरा होता है। कुत्ता अपने मालिक पे नहीं भौंकता है, आप कुत्ते से भी बुरे हो, पाकिस्तान पे भौंक रहे हो। दूसरी बात यह है कि मैं आपको मालिक नहीं है, बलोच हमारा दिल है, बलोचिस्तान हमारी जान है।
बलोच प्यार करते हैं पाकिस्तान से, बलोच प्यार करते हैं अपनी आर्मी से, बलोच प्यार करते हैं पाकिस्तान से। दूसरा भी आप चुप करें, देखें कुत्ता अपने मालिक से प्यार करता है, मालिक के आगे नहीं भौंकता है, इसका मतलब हुआ कि कुत्ते से भी बुरे हो आप। देखो तो पाकिस्तान पर लानत, पाकिस्तान के हुक्मरानों पर लानत, पाकिस्तान की फौज पर लानत, पाकिस्तान के हर उससे हुलतकार पर लानत जो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर, मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान और मकबूजा बलूचिस्तान पर पाकिस्तान की हाकमियत को तस्लीम करता है और उसे जायज करार देता है। मैंने अपने गेट पे तुम्हारा तो मुझे देख के नहीं भौंकता वो, लेकिन आप मालिक को देख के भौंक रहे हो। मैं बार बार कहूंगा, कुत्ते को बुरा कहूंगा, कुत्ते से भी बुरा कहूंगा। दूसरी बात यह है कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि देखिए अर्नब, हम दहशतगर्दी का शिकार हुए, हमारे मुल्क में दहशतगर्दी हुई, हम उसको अपने तरीके से सीधा कर रहे हैं। दहशतगर्दी को हम खत्म करने पे लगे हुए हैं ना। मैंने आपके पहले प्रोग्राम में भी कहा था कि मेरा पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है, हम दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। अगर पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से पाकिस्तानी फौज को ठुड्डे मार कर निकालेंगे, गिलगित बल्तिस्तान से उनको दरिया सिंध में बहाकर पाकिस्तान की काबिज फौज को। मैं कह रहा हूँ कि मैंने कुत्ता बांधा हुआ, खुदा की कसम मुझे नहीं भौंकता है वो। आप उससे भी बुरे हो जो मेरे गेट पे बना हुआ है। दोबारा कहूंगा, 10 दफा कहूंगा ये बात। दूसरी बात यार ना, देखें दहशतगर्दी मेरे मुल्क में है, मैं उसको संभाल रहा हूं और इंशाल्लाह दहशतगर्दों को वो अंजाम देंगे कि कभी दोबारा दहशत। तो मुझे ये बताइए एक मिनट, एक सवाल आपसे है, ओनली यू एंड मी ऑन स्क्रीन, बाकी सब चुप रहे 2 मिनट। आपने कहा कि दहशतगर्दी रोकनी पड़ेगी, है ना? और आप रुक जाइए, मेरी बात पूरी सुनिए प्लीज। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये पाकिस्तानी मेरे प्रोग्राम पर आके कहते हैं कि दहशतगर्दी रोक रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, हम टेररिज्म को खत्म करेंगे, उसको रोकेंगे। बहुत अच्छी बात। ये बात बताइए, जो सबसे बड़ा दहशतगर्द है आपका हफीज सईद, उसका क्या होगा? देखिए मैं आपको बताऊं उसका क्या होगा। सुने पहले मसूद अजहर का क्या होगा? मैं बता रहा हूँ, हाफिज सईद मसूद अजहर का क्या होगा? दीन की तालीम देने वाला आलिम है हाफिज सईद साहब। मैं बता रहा हूँ, मैं उनकी मस्जिद में ये देखिए, that's the General Bakshi, are you listening? ये लोग, they supporting Hafiz Saeed on my program and he's saying we are suffering from terrorism. He is the number one terrorist in the world and in Pakistan. That's why you deserve what you're getting, because you'll never improve. मेरे उलमा को दहशतगर्द किसी भी सूरत में आप नहीं कह सकते हैं, ना मैं इनका हक देता हूँ इस बात। मैंने कह दिया, हक की क्या बात है? हक मांग कौन रहा है आपसे? हक कौन मांग रहा है? मैं अर्नब गोस्वामी हूँ, किसी से हक नहीं मांगता। जो कहूंगा आपको सुनना पड़ेगा। आपको बलूच अब्दुल समाद याकूब is on the program, ladies and gentlemen, and the breaking news right now is this. The breaking news is Imran Khan has said, इमरान खान की पार्टी ने कहा है, और अब्दुल समद याकूब हो गई बहुत चुप रहते हुए, बात सुनते सुनते आप निकल जाते हैं मेरे प्रोग्राम से। हंसी मजाक का टाइम चला गया। आपके पाकिस्तान, आपकी देश हमारे आंखों के सामने टूट रही है। 44% ऑफ टेरिटरी नहीं टूटेगा तो आप, अरे बॉडी में नहीं टूटेगा, टूट रहा है। इट्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भाई साहब, आपके आंखों के सामने टूट रहा है, प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस। मैं अब्दुल समाद याकूब, a statement has been released by Pakistan PTI today, saying only one man can save Pakistan, only one man, and that man is in jail. The PTI has said सिर्फ एक आदमी पाकिस्तान को बचा सकता है, वो इमरान खान जो जेल में है। Abdul Samad Yaqub, what is going on in Pakistan? Have you totally lost control? देखें, डॉक्टर इरशाद के लिए तो इस वक्त सबसे बड़ा दहशतगर्द जो है वो इमरान खान है। हाफिज सईद को तो ये प्रोटेक्ट करेंगे, हाफिज सईद को तो ये मास्टरमाइंड या उसको मुंबई अटैक्स का नहीं मानेंगे, क्योंकि इन्होंने 200 केसेस जो है वो इमरान खान के ऊपर किए, तो इनको सबसे बड़ा थ्रेट इमरान खान से है। अब ये बाकी मसूद अजहर वगैरह इनके लिए तो और ये दहशतगर्द की तो ये अलाइज है इनके, ये दहशतगर्दों की जो पार्टी है हाफिज सईद की पार्टी, ये उनके अलाइज हैं, वो इनके सपोर्टर्स हैं। नून लीग और इनका ये इधर जंग में जो शिया का जो सुन्नी जो ग्रुप है वो भी इनका अलाय है। इनका तो दहशतगर्दों से एक नेक्सस चला आ रहा है। तो ये क्यों हाफिज सईद को दहशतगर्द कहेंगे या क्यों मसूद अजहर को दहशतगर्द कहेंगे, जो इंटरनेशनली
यूनाइटेड नेशन से डिक्लेयर्ड है और इस वक्त सो कॉल्ड जेल में है, ऑल्दो कि वो घर में है लेकिन ये उसको कहते हैं कि जी हमने जेल में रखा हुआ है। तो अगर दहशतगर्द नहीं है तो क्यों उसको सजा दिलवाई? मतलब ही इज कन्विक्टेड नाउ, ही इज नॉट इनोसेंट एनीमोर। तो इनका मसला जो पाकिस्तान का मसला ये है, इनका डॉक्टर साहब सुन लें, आपका मसला ये है कि 16 दिसंबर की रात तक आप ये कह रहे थे कि जी 16 दिसंबर तक के जी सब कुछ ठीक है, वहां पे ढाका के अंदर सब कुछ ठीक है। इसी तरह से आपको उस वक्त भी मुजीबुर रहमान जो था वो जेल में था जब पाकिस्तान टूटा था। हम आपसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त आप तोड़ चुके हैं पाकिस्तान। आपके पास अब कोई बलोचिस्तान अगर इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है जिसको आप अपने सोर्सेस के जरिए बता रहे हैं कि हमने वो यरगमाल जो थे वो बाजियाब करा लिए, ये सारा झूठ, ये सारा कुछ वही झूठ, वही सेम रिपीटेडली जो आप 71 में कहानियां गढ़ते रहे वही सुनाते रहे और आज हमें सुनवा रहे हैं कि जी, और हम ये बिलीव करते हैं क्योंकि ये पाकिस्तान का सोशल कॉन्ट्रैक्ट is totally been destroyed, totally been destructed. There is no social contract, there is no constitution which is left behind. I mean, my social contract with the state is massively violated by the state. It is broken by the state. तो इनको ये समझ ही नहीं आ रहा कि the point is Abdul Samad Yaqub, the fact is Irshad, listen to me, मेरी बात सुनिए, मैं मत करिए, मैं मत करते रहिए। पाकिस्तान से लोग देख रहे हैं क्योंकि अभी आप नहीं बोलिए, मगर थोड़े से ठहराव के साथ। ये मैं वाला अप्रोच मुझे अच्छा नहीं लगता है। शांति से बोलिए, गंभीर मामला है। थोड़ी आपके आवाज को सुन के भी लगे कि थोड़ा गंभीरता है आप में। कैसे बात करते हैं आप लोग? नो सेंस ऑफ पर्सनैलिटी। मेरी बात सुनिए, यही प्रॉब्लम है पाकिस्तानियों की। देखिए, आपने अभी कहा कि हफीज सईद हमारे बहुत बड़े मौलाना हैं, फलाना ठिकाना। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आपने 2020 में उन्हें जेल में डाला क्योंकि वो टेररिस्ट फाइनेंसिंग कर रहे थे, आपकी सरकार ने किया। तो आप डिसाइड कर लीजिए आप क्या बोलना चाहते हैं। आपने उनको जेल में डाला, और या कहा जेल किया, घर में ही जेल किया शायद, जो भी है। यू जेल्ड हिम बिफोर अ मीटिंग ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, क्योंकि आपको बोला गया कि इसको जेल में नहीं डालेंगे, इस बदमाश को, इस टेररिस्ट को, तो फिर हम आपको FATF में डाल देंगे। तो आपने बोला प्लीज मत डालिए, हम उसको जेल में डाल देंगे। उसी को नहीं, उसके साथियों को। और आज 4 साल बाद आपकी नीयत तो पता चल गई, प्रोग्राम में देखते देखते आपकी नीयत पता है। 4 साल बाद कह रहे हैं बहुत अच्छे आदमी है, NGO चलाते हैं, सोशल वर्क करते हैं। शर्म नहीं आती आप जैसे लोगों को? ओसामा बिन लादेन और हफीज सईद और मसूद अजहर को पालते हो, और बलूचियों को, जो गिलगिट बल्तिस्तान से के लोग हैं, जो इंडिपेंडेंस की बात करें, उनको कुत्ता कहते हैं आप प्रोग्राम में? इस तरीके से बात करते हैं क्योंकि नहीं, इस तरीके से बात करते हैं आप उसको। इस तरीके से आप बंगालियों के साथ, बांग्लादेशियों के साथ बात करते थे और बलूचियों के साथ बात करते हो। आपकी कोई, प्लीज डोंट क्रॉस द लिमिट विथ मी। इरशाद, लिमिट क्रॉस मत करिए। ये बेनस्ल इंसान है, आप गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अर्नब, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप गलत बात मत कीजिए। ये शख्स बलोचिस्तान से नहीं है, ये पाकिस्तान से नहीं है। आप इसको कैसे बलोची कह रहे हैं? क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्यों गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं आप? मैं आपको कैसे झूठ बोलने दूं? आपका चैनल है, इसका मतलब ये नहीं कि जो मर्जी ऑल फॉलो आप बोलते चले जाए। इससे पूछे इसका बाप कौन है, इसे बाप का पता नहीं है, आप इसको बलोची बना रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं? इससे पूछे इसका बाप कौन है, ये किधर का रहने वाला है, ये किधर का है, ये कौन है? ये देखिए पर्सनल बात है। पाकिस्तानी, आप इसको बलोच बना रहे हैं। बलोच इसे कुत्ता भी नहीं समझते अपना। कैसी बात कर रहे हैं आप? Ladies and gentlemen, I think Janjua is on the program. Let's go back to the issue. General Bakshi, the Pakistanis are not going to change. Arnab, can I please come? No, I'm just appalled, General Bakshi, at the way in which they talk to anybody who is not from Punjab. Anybody who is not from Punjab is spoken down to. Look at the way they talk. Absolutely, Arnab. This is the tyranny of the Punjabis that has led to the breakup of this country in 1971. It is that time it was bifurcated. This time it will be broken into 4. All because of this, overlordship, jackboot mindset. Arnab, but there is one thing which as a soldier pains me greatly.
whatever it is, we respect people in uniform. Now 182, that is what the Baluchis are claiming, Pakistani soldiers have been taken captive. I was shocked, Arnab, when the ISPR started showing us on Pakistan television 200 empty coffins being unloaded on the Quetta railway station. What does it imply, Arnab? Janjua, we don't care a damn. Janjua, see. We don't care a damn for those soldiers. Janjua, see. Stop taking. He's taking a call from the ISI right now. He's taking an ISI call right now. 200 poor boys. Sir, they did the same in Kargil. They left their... Arnab, just look at the faces of those Pakistani soldiers. I mean, they are so worried. They are so shocked. And here is the Pakistani army, the ISPR, which is showing these photographs of 200 coffins. Take the pictures. 200 coffins to put your soldiers in. What are you trying to message? We don't care for the lives of 200 soldiers. I mean, Major Janjua, you should go drown yourself, man. Tell your army this is not done. You look after your soldiers. Janjua ne. After all, they may be just plain Jawans, but they mean the world to us, man. How can you abandon people like this? You are showing 200 coffins. Arnab, I have never seen an army do this. I have never in my life seen an army do this. To its own people. Janjua, you are muted. You call yourself a field officer, man. Can't you tell your people? You are showing empty coffins. This is where we will put our hostage soldiers. Can't hear you, Janjua. Because we want to can't hear you. Excessive force. I have, Bakshi Sahab, I have heard you. Damn it, man. We all wear a uniform. Bakshi Sahab, I have heard you very You haven't heard me, boy. You haven't heard me, boy. You got wax in your ears. Don't you have eyes to see? I don't have you ever seen an army do this to its own I don't soldiers? like to talk the way you and all the panelists are talking. So when you are done talking, let me know, then I will talk. Then talk to us decently, man. But try and justify this. Yes. Try and justify this. Pakistan, India, You cannot justify Have this. you ever seen this being done to your soldiers? Then let us know. Why are you showing 200 empty coffins on the railway station of Quetta when the Baluchis have said there are 184 Pakistani soldiers in our custody? I've heard you, now it's my turn. Please, Major Janjua, you are a soldier. Talk like a soldier. Yes, that's what I'm saying. Okay. First and foremost, the operation has been completed. 35 terrorists have been killed and 346 hostages have been released safely. There have been casualties of the armed forces personnel, but that are in double digits only, and that's it. So any false news that you are portraying is wrong. Anybody is trying to portray, he's at liberty to do whatever it is. There are no 200 Are you coffins. telling me this picture is false? Bakshi Sahab, No, Major Janjua, let's please. I mean, this is not for the sake of argument. Are you telling me these pictures of empty coffins on Quetta railway station are false? You prove to me that these are 200 coffins. I'll shave my head right now. Are these 200 coffins? This is in front of you. So they how picked many up from coffins Pakistani channels, man. So how many coffins are these? We were once one army. Pakistan army and Indian army were one army. We had one ethos, one Chetwood motto. These coffins. I have never heard of, the insurgents tell you we've got 184 Pakistani soldiers in our captivity. And you sent thoughtfully, you sent 200 coffins. 200 coffins to Quetta railway station. We don't give a damn. What does it imply, man? It implies I don't give a damn. Once you go into... I don't give a damn. They are ordinary soldiers. And I was seeing the photographs of those poor soldiers. I was feeling bad. There are casualties. The way you have abandoned them, man. This incident... You signed their death warrant before your bloody operation has started. God is kind. We have eliminated all the terrorists in 24 hours' time. That's what you should understand. There was mopping up going on. You understand what mopping up is. And these coffins are, sir? And this mopping up... And these coffins, sir, are for whom? Don't lie, Janjua. I don't know whose PR you're trying to push on my program. Hold on.
1 minute. Freeze Whose the PR are frame you here, pushing on my freeze the program? frame here, No, and you count you the said coffins. double digits. Are What these is double loaded digits? coffins? 11 or 99? Don't lie, Janjua. I caught you lying. Arnab, But this are is these- terrible. Janjua, you're lying. Arnab, actually, frankly, as a soldier, I feel outraged. But that's how the Yes, you Pakistanis... are- I feel outraged. Because How have can been you trying consign, since just because they are 1947. normal Jawans, they're not don't some care. general officer's From son, you 1947, consign you them are to their trying death to even before the dismember operation has Pakistan, started. and Arnab Here are the Goswami coffins, comes on we'll the put TV them in that program bloody every coffin. night We don't give a trying to tuppence, we dismember don't give a Pakistan. damn Cannot. for our soldiers. I mean, that's why you lost in 71. No. Major Janjua, shall I tell you one thing? In the 71 war, we spoke to one Pakistani Subedar major of the frontier force. And you know what he told us? साहब आपके अफसर होते और हमारे जवान, फिर हम देखते कौन सी फौज हम पे हावी होती, कौन सी फौज हम पर फतेह पाती. बैंड बजाई थी हमने. You don't care for your men, man. In Kargil, you refuse to take the dead bodies of your Northern Light Infantry troopers. You refuse to take that dead bodies back. We had to bury them with full military honors. Man, it's not done, yaar. Any soldier, you know, whether of your army or of my army, when he dies for his country, when he faces all kinds of trauma for his country. Everyone is on today, and viewers, what's happening today, I want to give you a historical context. If you can zoom in for a moment, please. I just want to give you a historical context to this. And Abdul Samad Yaqub, I'm saying this to you and Irshad, and to General Janjua. You see, the backstabber Jinnah. He's a backstabber, weak man, Muhammad Ali Jinnah. You know that Khan of Kalat, 1946, appointed Jinnah as his legal advisor to represent his case before the British Crown, right? And Jinnah, who took money from the Khan of Kalat, he took money. He supported the Khan of Kalat's decision for independence at a meeting with Nehru and Mountbatten in 1947, August 4th. It was then agreed that Kalat will be independent from August 5th, 1947. August 11th, 1947, ये सच्चाई है, मैं बना के नहीं बोल रहा, ये कलत और मुस्लिम लीग के बीच में ट्रीटी साइन की, in which Kalat was declared and recognized as an independent state. Within 4 days, the backstabber Muhammad Ali Jinnah, the liar backstabber, he told the Khan, please merge with Islamabad. Arnab Goswami, you walk मैं your सच्चाई word, बोल रहा or I'm हूँ. going to use No. language This that is will what you give you did. nightmares. This is what you did. This is what you did. Instead, Jinnah and the Pakistani Prime Minister met Khan and told him to expedite the merger with Islamabad. Balochistan was never meant to be a part of Pakistan. Balochistan was always meant to be independent. Balochistan was always meant to be independent. That's a fact. That's a fact. And you know it's a fact. Bloody bastard. You know that's a fact. Control your language and put his volume down. The reality is Balochistan was meant to be independent. Control your language. Just because you've been defeated by the Balochis today. They were meant to be independent. Swallow that. They are fighting for independence. दो बातें, एक तो ये They were, no, 1 minute, Mirza, 1 minute. They were fighting for independence. And if you, 1 minute, just one point. One point. Abdul Samad Yaqub, please understand. The main leader whose writ ran over Balochistan wanted to be independent. He did not want to be, he was not meant to be part of Pakistan. He was not meant to be part of Pakistan. You have to make an apology while calling such humiliating words. I said he's a backstabber because Jinnah backstabbed him. No. Didn't Jinnah backstab him? No, the word Did you Jinnah used, backstab him? I said he was weak. The word liar, no, backstabber is something else, but the word, the liar you have used, I mean, I strongly object. I tell you, I will repeat it again, that Jinnah backstabbed the Balochis. Am I right or wrong? General Bakshi is on the program. You can be witness to that. Did Jinnah backstab the Balochis? General Jinnah, did Jinnah backstab the Balochis? Did he or did he not? Absolutely, 110%, Arnab. For God's sake, he was their lawyer.
He was the pleading on their lawyer of the behalf. Baluchis. He was the person. You don't who- want to hear the truth. Hold on a minute. He was the lawyer of the Baluchis. Independent 12th of August. Hold on a minute. 12th of August. First of The all, moment he became General Quetta, No, no, one he minute, one ordered minute. the army to General invade the same country whose freedom, Yasir Janjua. whose independence he was pleading for. One minute, Yasir Janjua and Yaqub. The How fact can is, we deny? was Jinnah the lawyer for the Baluchis or not? That is the only question to ask tonight. 1 minute. Was Jinnah the lawyer for the Baluchis or not? Can you counter that, Janjua? Watch your language before you speak. You foul-mouthed fellow. I am telling you this. Was Jinnah a lawyer for the Baluchis or not? Was Jinnah asking for... You control your language. You're obviously not in your senses. Was Jinnah the lawyer for Baluchi independence or not? Answer the question. Was he the lawyer for the... you're just a foul-mouthed guy. I'm talking a historical truth. I will keep you quiet right now because you're not in your senses. Was Jinnah the lawyer for the Baluchis or not? Did Jinnah legally fight for Baluchi independence or not? 1 minute. No. Volume down. I am talking a more civilized language than you are ever capable of. Was Jinnah, the question is, did Jinnah fight a legal case for the Baluchi independence or not? That's my only question. If you say no, then counter me with fact. Mirza, 1 minute. ये गाली वाली देके कुछ होने वाला नहीं है. मेरी बात सुनो. Answer the fact. Answer the fact right now. Be in control of yourself. Did Jinnah fight a legal case for Baluchi independence or not? Don't keep shouting and spitting like that. Did he fight a case for Baluchi independence or not? Or I'll give you the... Did he fight a case for Baluchi independence or not? Ask General Bakshi. General Bakshi, am I right or wrong there? You watch your words. You watch your words. You are obviously behaving. Stop spitting into the camera. My question is, did Jinnah fight a legal case for Baluchi independence or not? What is there to watch? I'm asking you a question, answer me. Arnab Goswami, say yes or no. Did he or did he not? Did he or did he stop wagging your finger and spitting into the camera? Pull yourself back. Did Jinnah fight a legal case for Baluchi independence or not? Ask General Bakshi. Now you'll say I won't answer because you know the truth that Jinnah fought a case for Baluchi independence. You apologize first. Jinnah fought a case for Baluchi independence. Stop wagging your finger at me. General Bakshi will tell you the facts tonight. General Bakshi. Look at the volte face he did when he came to... General Bakshi, you tell him. You tell him right now. The volte face. He turned around. Jinnah turned around later. First, he fought a legal case because the Baluchis were his legal clients. Then he turned around and he said, you change your position. That's called backstabbing in my dictionary. General Bakshi, you want to answer that? Give him the reality, General Bakshi. Stop shouting. Stop shouting. You'll have a heart attack on my program. That is not backstabbing. For God's sake, define backstabbing, man. Define backstabbing. If that is not backstabbing, what the hell else it is? Bakshi Sahab, I requested you refrain from using any derogatory word. He has not used any derogatory word, and neither have I. Backstabbing is not a derogatory word. It's an act. Backstabbing is not a derogatory word. Of the matter. Backstabbing is what happens when you take one side 1 minute and change it the next. Now you listen to me, Major Janjua. You listen to me. I am not in favor of any violence. I am not in favor of any such action. But I am only giving you the history of Balochistan. The history of Balochistan is a proud history. The people of Balochistan have been fighting for their independence. Treat them like human beings. Abdul Samad Yaqub will tell you, treat them like human beings. You've treated them terribly in the past. You come and call them names on my program. Pakistan in the same manner create a storm in the cup. It's terrible. It's not a storm in a teacup. It's not a storm in a teacup. It's bad. Balochistan was annexed in Pakistan in the same manner the other states were annexed. It was like the same procedure. The same procedure was adopted, and the Balochistan was annexed to Abdul Pakistan. Samad Yaqub, the situation is very serious. Like the way you need to know how serious the issue is, sir. Baloch has gone out of the creating this seriousness of issue for they have to last open their eyes and see it. Since 1947. Every day India thinks Pakistan will be dismembered. And therefore they have revolted against you. It has gone out of your hands. Please open your eyes and see. That personally, I don't care what happens to Pakistan.
It will self-implode, but the realization must come. Please look at the way you all treated the people of Balochistan. Right. Do some soul searching. Please understand that when dictatorship is on the rise, then you have those independence. The revolution is not a choice, it's a destiny, my friend. You can say whatever you want. You can't point You have looked down on the people of Balochistan. You have forced them to choose this path. 7 states You have forced them to choose the path. And you are talking to Pakistan about independence. I'm talking to Pakistan. I don't care about Pakistan. Pakistan must self-implode. Pakistan has to self-implode. Because other than donkeys, they have nothing else in their life. Pakistan. And what you are doing in Pakistan is only about trading in donkeys. There's dissident and terrorism. It's not dissidents. You are getting a taste of the same medicine. You are getting the taste of the same medicine. It is not right. But you are getting a taste of the same medicine. When you sleep with the devil, eminent spelling. you give birth to demons. When you sleep with the devil, you will give birth to demons. And that is what Pakistan is seeing. When you play with terrorism, terrorism is going to come back at you. And you are witnessing terrorism right now. It is not right. But the people of Balochistan want to be free. The people of Balochistan need to be free. Who gives you the right? They have been oppressed. They have been targeted. They have been tortured. They have been kept aside. If they want to be free, they will go to the Legislative Assembly. They will go to the Parliament. Spare me the lecture, my friend. Spare me the lecture. And they'll set themselves free. First, you get terrorism out of Pakistan. Balochistan Liberation Army. Get terrorism out of Pakistan. Then we talk. Balochistan You're a Liberation bloody Army terrorist is not the state. voice of Balochistan. You have to understand this. You are home to terrorists. And that is Okay, I have to say tonight, ladies and gentlemen, we are getting different bits of information on the situation there. The Pakistanis are saying we have been able to control the situation. The Baloch Liberation Army are saying they have the upper hand. Ladies and gentlemen, the situation with Balochistan is very serious. And I can see here the imminent independence of Balochistan. That is 44%, I repeat, 44% of the territory today of Pakistan. Only 56% then remains. Ladies and gentlemen, I'll see you tomorrow. Good night and goodbye. Time for a quick breather.